ओके आज ना मुझे आपके साथ अपनी एक बहुत ही वियर्ड हैबिट शेयर करनी है। और वो ये है कि मुझे ना जब भी मैं किसी को सुनती हूँ वो बोलते हैं रामायण को रामायणा, महाभारत को महाभारता, हिंदू पुराण को हिंदू पुराणाज। तो बहुत स्ट्रेंज लगता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। आई जस्ट फील व्हाई कांट यू से द ओरिजिनल नेम, लाइक व्हाई कांट यू जस्ट कॉल इट रामायण महाभारत एंड हिंदू पुराण? व्हाई डू यू हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा ए टू इट? बट खैर ये डिस्कशन कभी और से ही। लेकिन आज जो मैं आपके लिए बुक लेकर आई हूँ ना, वो पुराणों पे बेस्ड है, हिंदू पुराणों पर। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है महागाथा, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 टेल्स फ्रॉम आर हिंदू पुराण्स बाय सत्यर्थ नायक। नाउ सत्यर्थ नायक जो है ना, उन्होंने इससे पहले श्रीदेवी पर एक किताब लिखी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। सत्यर्थ नायक ने इस किताब में बहुत ही अच्छे से हमारे हिंदू पुराणों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को कंपाइल किया है। Now, the most interesting part about this book, which I found, is that this is not a book that has been randomly written, in the sense that somebody just compiled all the stories, all the most interesting stories from all the Purans and put it right here, 100 of them. No, actually Satyarth Nayak has tried to maintain a chronological order. एंड जो बहुत बड़ी बात है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज सारे पुराणों में से एक टाइमलाइन लेकर चलना और फिर उस हिसाब से सारी कहानियाँ लिखना और उस टाइमलाइन को भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक यही इस किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। So we have many Purans, Hindu Purans. We have Vishnu Puran, we have Shiv Puran, we have a Puran completely dedicated to the creation of the universe. We have Garud Puran, which is about what happens to you after death. So Satyarth Nayak has taken most interesting stories from all these Purans and has presented in his way, keeping the essence of the real stories alive. He's just rewritten in these stories in his words. But also the second most interesting part of this book is, apart from his writing of course, are the drawings. At every page you will find very very interesting drawings depicting what happened in the story, and which makes it very beautiful. Even if you look at the cover, so intriguing. One of this book is also a visual delight as well. Let me show you few drawings that I loved in this book. Like for example this one. I hope you are able to see it. So ऐसी ही बहुत सारी और drawings हैं इस किताब में, जो इस किताब को ना सिर्फ पढ़ने लायक बल्कि देखने लायक भी बनाती हैं। सो इस किताब में आपको 100 ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिस बुक हैज़ स्टोरीज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, how our universe was created, and stories of all the gods, how they were created, and how also just like us humans, they've also made some mistakes in their life and have paid a huge price for it. How everything is connected to the universe and how यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू यू। अच्छा, जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जैसे जिन्होंने अपनी ये जो कहानियाँ हैं पुरानों की, ज़्यादातर कहानियाँ अपने बड़ों से सुनी है, अपने घरों में अपने बचपन से लेकर, हाउ आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू टेल अस स्टोरीज, आवर पेरेंट्स टेल अस स्टोरीज, एंड ऑल्सो पीपल अराउंड अस। कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं पुरानों में, जैसे आपको याद होगा कि हमने नवग्रह पुराण यहाँ पर पढ़ा था, उसका रिव्यू भी किया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। लेकिन उसके बावजूद भी ना, कि इन सारी ऑलमोस्ट सुनी सुनाई कहानियों का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला मुझे जब मैंने इस किताब को पढ़ा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण अपलिफ्टिंग गोवर्धन पर्वत, राइट, द माउंटेन Govardhan. And but there's a different perspective to it. If you look at it carefully, Lord of gods, Indra actually has this problem of overthinking. He's scared, he's full of fear all the time. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि यार नेगेटिव ही सोचते हैं या फिर ओवर थिंक करते हैं, जो सिचुएशन होती भी नहीं है उसको बना देते हैं अपने माइंड में बड़ा। इंद्र भगवान भी ना कुछ ऐसे ही हैं, बिकॉज उनको जब भी कोई धरती पे तपस्या करता था, उनको हमेशा लगता था कि बस वो उनका सिंहासन छीनने के लिए ये तपस्या कर रहा है, या जिसको कभी कोई भी भगवान वरदान देने वाले होते थे तो वो हमेशा उसकी तपस्या भंग करना चाहते थे, क्योंकि वो डर जाते थे, उन्हें लगता था कि उनका सिंहासन कोई ना ले ले उनसे। So in this story, Krishna Bhagwan actually tells Indra how to first accept your fear, then how to fight it and how to win it.
with very, very simple techniques. And that's very, very interesting part of this story. So like always, I'm going to read my favorite lines from this book for you, because I'm not going to tell you about the stories because they're very interesting and I think you should read it yourself. I have thoroughly enjoyed all the stories, even the stories that I had heard before or I had read before, because they actually offer you a different, perspective. But my favorite lines are from a part where Krishna ji's wife, Rukmani, actually tells him or kind of teases him that you know everything. मतलब आपको तो सब कुछ पहले से पता होता है ना. तो उसका जो जवाब कृष्ण जी देते हैं वो बहुत खूबसूरत है. Yes, the omniscient one. Do you know the curse of being omniscient, Rukmani? I do not possess the comfort of hope like humans do. Hope that eases their burden, that helps them live out each day. I cannot hope because I already know. So if you're one of those who've not read Purans and find it difficult to read, and if you're comfortable in English language rather than Hindi or Sanskrit, then please make sure you pick this book up, because it's really going to make all these Purans very, very interesting for you. And it's an easy breezy read, as I said, because it's been written in a very, very simple language. And also let me tell you, there are a lot of people who think that Purans are just stories. No, there's a lot of science in it. There's a lot of logic behind these stories. And I would suggest, after you finish this book, if you're more interested in Hindu Puran, then please make sure you read another book it's called From the Beginning of Time by Ganesh Swaminathan. And I have done the review on this channel already. That book actually compares the Puranic view of the universe, how the universe was created, with the actual calculations, like the modern view on how universe is created. And you will find the calculations, the timelines almost accurate, almost same. मतलब जो बात हमारे पुराणों में इतने सालों पहले कही गई, वही बातें आज प्रूव हो रही हैं. और हर कहानी का जो लॉजिक है ना, वो उसमें दिया गया है. एंड दैट्स अ वेरी, वेरी, इट्स अ माइंड ब्लोइंग रीड. आई हैव ऑलवेज सेड दिस. So please make sure you watch that video also of the review of that book. The link is there again in the description box below and also on the I button above. So Mahagatha by Satyarth Nayak is an interesting read, and it definitely deserves a place in your library. And if you think I also deserve a place in your life, then please make sure you like, share and subscribe. And मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.